on a journey through the cosmos of Lucknow's history. Today's evening, we hope you will finally understand why Lucknow is a city that has been known for inspiring smiles. तो फिर मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं. Tehzeeb. It's not just politeness, it's an emotion that flows through the veins of every Lucknowi. It's inclusive and encouraging, an environment where every child feels safe, loved, and proud. With that, I ask you all to sit back and relax and listen to the melodious voice of Shia College with the group song La Pe Aati Hai Dua. Give them a huge round of applause. लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया What a heart-touching performance. After this wonderful, soulful performance, we are moved forward for our next solo performance, Arzia.
अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ। तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। या मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 मौला। दरारे दरारे हैं माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ। तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ। मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला। जो भी तेरे दर आया, झुकने जो सर लाया, मस्तियाँ पिए सब वो झूमता नजर आया। प्यास लेके आया था, दरिया लेके जाएगा। प्यास लेके आया था, दरिया लेके जाएगा। नूर की बारिश में, नूर की बारिश में भीगता नजर आया। मौला 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 मेरे मौला 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 मौला। दरारे दरारे हैं माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। Thank you. I hope you all were enjoying the performance. थोड़ा माहौल शायराना बनाते हैं। मैं लहजा थोड़ा ठंडा, बातें गरम सी रखती हूँ। मैं लहजा थोड़ा ठंडा, बातें गरम सी रखती हूँ। लोगों से राब्ता कम, वाबस्ता लखनऊ शहर से रखती हूँ। लोगों से राब्ता कम, वाबस्ता लखनऊ शहर से रखती हूँ। Now, I would like to request a play, दास्तान-ए-अवध. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adab. Good evening, honorable members of the NAAC player team, respected guests, ladies and gentlemen. On behalf of Shia PG College, I welcome all of you. Today, we are presenting the history and culture of Oudh, that is Lucknow, in a brief through this play named Dastan-e-Awadh. The last king of Oudh was Nawab Wahid Ali Shah, and his Begum was Begum Hazrat Mahal, in whose regime the kingdom of Oudh was on its zenith. Nawab Wahid Ali Shah Bahadur was extremely popular among his subjects, and there was peace and harmony all along. He was a great patron of fine arts and literature. He had written 105 books on various subjects and knew 13 languages. He introduced Thumri, the vocal style of singing, Ek Tal and Teen Tal of tabla, and gave an international stage of Kathak dance. He was a great poet and extremely a secular king. Nawab Wahid Ali Shah used to celebrate Janmashtami in his darbar, that is in his court,
and play Holi with his citizens and observe Muharram and lead the Muharram procession barefooted. And this is the reason why the culture of Lucknow is popularly known as Ganga Jamni Tehzeeb of Oud. The Nawab has beautifully compared his two phases of life as a king and after his abdication. एक आलम था पिसा करते थे गौहर पाँव के नीचे, एक आलम था पिसा करते थे गौहर पाँव के नीचे, वही हम हैं कि सर पर धूप कंकर पाँव के नीचे. Now here in the play, Nawab Vizier Shah Bahadur is leading out his wife Begum Hazrat Mahal, his son Prince Vizir Qadr and his people. And Begum Hazrat Mahal and Prince Vizir Qadr stayed back to look after out. Now we are presenting before you the play Dastan-e-Awadh. सुनो सुनो सुनो, हल्के खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म कंपनी बहादुर का. सुनो सुनो सुनो, सल्तनत अवध के बाशिंदों सुनो, बाशिंगाने अवध पर जो जुल्म और सितम हो रहे हैं, उसे रियाया को निजात दिलाने के लिए अवध की सल्तनत का इंतजाम मुस्तकिल तौर पर कंपनी बहादुर ने अपने दस्ते मुबारक में ले लिया है. लिहाजा ये ऐलान किया जाता है कि हुकूमत अवध आज और इसी वक्त बगैर किसी शिरकत के हमेशा हमेशा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल की जाती है. सुनो सुनो सुनो, सल्तनत अवध के बाशिंदों सुनो, सुनो सुनो सुनो, सल्तनत अवध के बाशिंदों. लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचा बाजार नहीं, लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं. हुस्नारा, हम ये क्या सुन रहे हैं? जरा दरोगा ममू खां बहादुर को बुलाओ. जो हुक्म लेगा साहिबा. नाजुकदा, जरा फैसलाबाद के हालात मालूम करो. जी बहुत खूब. अम्मी हुजूर की खिदमत में गुलाम आदाब बजा लाता है. जीते रहो मेरे बेटे, उम्र दराज हो. है तो है अम्मी हुजूर, आज आप मामूल के खिलाफ कुछ अफसरदा नजर आ रही हैं. हाँ मेरे लाल, आज खानदानी शुजाउद्दौला पर मुझे गम की घटाएं छाई हुई और मुसीबतों के पहाड़ टूटते हुए नजर आ रहे. ये आप क्या करवा रही हैं अम्मी हुजूर? हाँ मेरे बेटे. मम्मू खां बहादुर, इतने हुजूरी के आज़ाद है. इजाजत है. बेगम साहिबा की खिदमत में महबूब खलीफा आदाब जानी बजा लाता है. मम्मू खां बहादुर, आपने मम्मू बहादुर का ऐलान सुना? वही ऊपर इसका देखा था. तिरंगियों की मक्कारी अपने निकाब हुई, लेकिन सुल्तान आजम ने बहन नाज़ुल्लाह फरमाकर निहायत बुलंदी का सबूत दिया है. मगर सब ही एक सल्तनत का हुक्म देने वाली कंपनी कौन होती है? अली नबी खां बहादुर कोशिश करवा रहे हैं कि इस वक्त लाकर को वापस ले लिया जाए. सुल्तान आजम को एक मौका फराहम किया जाए, लेकिन क्या? जन
वो इस बात पर बधिर है कि सुल्तान आलम राजीनामे पर दस्तखत बनवा दे। बेगम साहिबा, सुल्तान आलम तशरीफ ला रहे हैं। होशियार अबुल मंसूर, नसरुद्दीन, सिकंदर जहां, सुलेमान हाशमी, कैसुरज़्ज़मा, सुल्तान आलम वाजिद अली शाह बहादुर बन नफ्से नफीस तशरीफ ला रहे हैं। बादब बामुलाइजा होशियार, बादब बामुलाइजा होशियार। बेगम हजरत महल, हम आपसे रुखसत होने हैं। हम आज ही विलायत के लिए रवाना हो गए। हमारे आबा व अजदाद और फिरंगियों के दरमियान जो दोस्ताना ताल्लुकात थे, इसका आपको इल्म हुआ कि इस दोस्ती का सिला फिरंगी किस तरह थे। लिहाजा हमने तय किया है कि हम विलायत जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। क्या आपके इरादे में तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है? क्या अवध का बादशाह फिरंगियों के हुक्म का पाबंद है? सुल्तान आलम अभी वक्त आप विलायत तशरीफ ना ले जाएं। हमारी फौजें फिरंगियों के मुकाबले के लिए काफी है। हजरत है, क्या आप समझती हैं कि हम फिरंगियों से बहुत ज्यादा होकर अपनी जान बचाकर भागे जाए? खुदा की कसम, नापाक शुजाओ तौला का कोई भी फर्जंद आज तक मौत से नहीं हुआ। लेकिन ये अंग्रेज फरेबी मक्कार, उन्होंने अपने मकरो फरेब से शाही महल की बुनियादों को खोखला कर दिया। आज कितने ही शाही खानदान के अफराद और अहलकार दौलत की लालच में आकर उनके इशारों में नाच उनके तलवे चाहते हैं। हमें अपनी आपसी रंजिश में बेगुनाह रह तो नहीं मानते। अब आप ही बताएं हजरत है, क्या हमने कभी अपनी रियाई की भलाई के कामों में कोई कोताही फरमाई? कभी नहीं आलिजा। फिरंगी हम पर इल्जाम आयद करते हैं कि हम रात और दिन नाच और रंग में पड़े रहते हैं। हम राजा इंदर बनते हैं, हम किशन जी का किरदार भी अदा फरमाते हैं। हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि ये कौम इस कदर झूठ बोल सकती है। और फिर थोड़ी देर के लिए मान भी लीजिए कि हम राजा इंदर बनते हैं, हम किशन जी का किरदार भी अदा फरमाते हैं, तो इसमें कौन सी बुराई है? हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमें इस मुल्क की तहजीब और तमद्दुन से मोहब्बत, और फिर हम सिर्फ मुसलमानों के ही हिंदुओं के भी बादशाह हैं। ये दोनों कौमें हमारी दोनों आंखें। खैर छोड़िए इसे, हमने तय किया है कि हम विलायत जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। हम मुल्क का खेल ना खेलकर अपना रास्ता इख्तियार करना है। ये दुनिया का कोई भी मसला जल्द से तय नहीं किया जा सकता। बेगम हजरत है, आप तो जानती हैं कि आप दौलत आपसे किस कदर मोहब्बत करते हैं। आपको पूरी आजादी, आप क्या कहना चाहते हैं?
इकबाल ने अपनी मक्कारी, जालसाजी और दगाबाजी की वो गंदी नजीर पेश की है जिसको शायद तारीख कभी माफ न करे। नवाब सिराजुद्दौला ने फिरंगियों से इस मुल्क को हमेशा हमेशा के लिए पाक कर दिया होता, मगर अफसोस मीर जाफर का दाल अगर फिरंगियों से ना मिल जाता, और काश कि फिरंगियों से बक्सर की जंग में हमारे जद्दे अमजद ना हार जाते, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बसरे इख्तियार होती ही ना। ये तो सब आपसे खून का नतीजा है। अगर मुगल, पठान, मराठा, राजपूत, जाट और सिख सब आपस में ना लड़ते, तो आज फिरंगी इस तरह मुल्क पर छा न जाते। इसी बात का तो रंज कि हम हिंदुस्तानी मजहब पर तो जान दे सकते, मगर उसके उसूलों पर अमल नहीं करते। आज का इंसान मजहब से बहुत दूर हो गया। आप बचा फरमाते हैं, दुनिया के तमाम मज़ाहिब अमन व आशरे का पैगाम लेकर आए, मगर आज मजहब के नाम पर न जाने क्या क्या फितना और फसाद बरपा है। इसीलिए मां बदौलत कुरैशी पसंद नहीं करना। लेकिन जहांपना, ये वक्त इन फिरंगियों से मुकाबला करने का है, वरना हमेशा हमेशा के लिए हमारा वतन इन फिरंगियों का गुलाम बनकर रह जाएगा और तारीख में ये भी लिखा जाएगा कि सुल्तान आलम वाजिद अली शाह हुकूमत और रियाया को फिरंगियों के रहमो करम पर छोड़कर चले गए। बेगम, आप हमें दोष दिलाए। खुदा की कसम, वाजिद अली शाह को अपनी जिंदगी अजीज नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पर इल्जाम आयद किया कि हम हुकूमत का इंतजाम खुशनसीबी से अंजाम नहीं फरमा पा रहे और हमारे अहम में हमारी रियायत जहमतें उड़ाई। लिहाजा गवर्नर जनरल ने रियायत की भलाई को मद्देनजर रखते हुए हमें सल्तनत से दस्तबरदार हो जाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मैं कहती हूँ कि गवर्नर जनरल होता कौन है हुक्म देने वाला? सन 1801 ईस्वी के सुलहनामा की शर्त 6 और 8 के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी को बादशाह या वक्त मासूल करने का कोई हक नहीं है। अंग्रेजों की नीयत खराब हो गई, उनकी हिर्स और हवस बढ़ गई, इसीलिए उन्होंने फौजी कार्रवाई की धमकी दी। अगर हम हुकूमत से दस्तबरदार नहीं होते तो वो जंग पर आमादा हो जाएंगे। और आप तो बेहतर जानती हैं बेगम कि इस वक्त हम ऐसे सूरते हाल से दो चार हैं कि हम अंग्रेजों से जब तक लोहा नहीं ले सकते, क्योंकि घर का बेदी ही लंका डा रहा है। फरमाइए। अगर आपको इजाजत हो तो ये कनीज यहाँ रहकर अवध के हालात पर नजर रखना चाहती है। मुझे यकीन कामिल है कि आप इस इलाके जब इन हालात की खबर राया होगी तो वो इस तमाम फिरंगियों से जरूर लेगी। मेरी दिली ख्वाहिश है कि वतन पर फिरंगियों का मनहूस साया बाकी न रहे। बेगम हजरत है, आपकी वतन परस्ती का जज्बा यकीनन काबिल-ए-तारीफ है, मगर हमें यकीन है कि हम विलायत जाकर मुकदमे में कामयाब होकर जल्द अज जल्द अपने वतन वापस आए और हमारी रियायत की सारी परेशानियां दूर हो। क्या आपको यकीन है कि आप मुकदमे में कामयाब हो जाएंगे? इंशाअल्लाह। हमारे मुशीरों ने हमें यही मशवरा दिया कि जंग के बजाय कानूनी तरीके से कार्रवाई करें। खुदा आपको अपने इरादों में कामयाब करे, लेकिन सुल्तान आलम मेरे दिल को यकीन नहीं आता। किस बात का बेगम मसला है? हैदर अली की हत्यारे, टीपू सुल्तान के कातिल, सतारा, झांसी, नागपुर और ब्रह्मा के लुटेरे हमारे मुल्क के दुश्मन बादशाही अवध के साथ भी इंसाफ नहीं करेंगे। ये कहाँ की समझदारी है? ये कैसा मशवरा है कि सांप के बिल में हाथ ये समझ कर डाल दिया जाए कि वो डसेगा नहीं? शहद की मक्खी के छत्ते से शहद ये समझ कर निकाला जाए कि मक्खियां खामोश जाएंगी। लेकिन हम मजबूर हैं। हमें गोरे नुमा काले नागों ने जकड़ लिया। हम में अब इतनी सकत नहीं है कि हम इनके फलों को कुचल सके। अगर हम इनसे अभिजन करते हैं तो आपको मालूम है क्या होगा? क्या होगा आलिजा? अवध का बच्चा बच्चा यतीम हो जाएगा, हजारों और लाखों औरतें बेवा हो जाएंगी। हम नहीं चाहते कि तख्तो ताज और अपनी शान और शौकत के लिए लाखों बेगुनाह इंसानों की गर्दनें कटवाएं। एक बादशाह की हैसियत से क्या हमारा यही फर्ज है
कि अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए और सल्तनत की हवस में रियाया को जंग की आग में झोंक दे और इसके बाद एक शिकस्त कुर्दा कौम की हैसियत से अपने आप को फिरंगियों के हवाले कर दे। लेकिन जहांपना सवाल तब तो ताज का नहीं है, सवाल वतन की आजादी का है। हमारा इस तरह खामोशी से सल्तनत से दस्तबरदार हो जाना वतन के लिए, रियाया के लिए और खुद हमारे लिए बाइसे इज्जत, क्योंकि हम दुनिया के सामने मजलूम और फिरंगी का से। मगर आलिजा, हजरत महल, वतन के कुछ ही लोगों ने हमसे और वतन से गद्दारी करके फिरंगियों को अपने ऊपर मुसल्लत। हमें अब ये देखना है कि रियाया फिरंगियों के जुए को अपने कदमों से न उतार दे। सुल्तान आलम, सामान्य सफर तैयार हो चुका है। प्रेसिडेंट बहादुर भी आपको रुखसत करने की गरज से तशरीफ ला चुके हैं। अच्छा हजरत महल, अब हम आपसे रुखसत होते हैं। हमें लखनऊ छोड़ने का बेइंतहा हमारी खुदा से यही दुआ है कि अहले वतन खुश रहे, आबाद रहे। नासुकदा इमाम साहब लेकर आओ। आलिजा, क्या इस गुलाम को आप यहीं छोड़ जाएंगे? आपकी वालदा हमारे हमरा नहीं जा रही, लिहाजा आपका ये फर्ज है कि आप अपनी वालदा के साथ रहें। आलिजा, आप कब तक तशरीफ लाएंगे? मेरे बेटे, ये सब तो हालात पर मुनहसर है। अच्छा, सब लोग हमारे मुंतज़िर हैं, हमें इसी वक्त कानून के लिए पूछ रहे हैं। हुस्नारा, खुदा और तंजीद अली का आपको अपने अमन और अमान में रखे और आपकी जान की सलामती में आपको अपनी मंजिल तक पहुंचे। आमीन। दरो दीवार पर हसरत से नजर करते हैं, दरो दीवार पर हसरत से नजर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। I truly believe that this play is the most elegantly accurate depiction of Lucknow's culture,
and Ganga Jamuna Tehzeeb, a story of not just coexistence but also fraternity. After that eloquent song, we are delighted to introduce a choir from our college singing the song We Shall Overcome. For them. That was truly magnificent. Such a beautiful melody. You are truly gifted. The way you convey emotions is incredible. Now, a choir going to present a Sufi song, Mankunto Mola.
मनम गुलाम अली अली मनस्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदाई नामी अली एहे मन कुन तो मौला एहे मन कुन तो मौला फाली उन मौला मेरा मौला फाली उन मौला अली मौला फाली उन मौला मजहरे रहमत की बुरिया बन गए ओ तंगे दस्ती में दस्ते खुदा बन गए तंगे दस्ती में दस्ते खुदा बन गए अरे उम्र मुश्किल में सारी गुजारी मगर अरे सारे दुनिया के मुश्किल कुशा बन गए मौला अली मौला 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 हुई शादी ना ऐसी हजरत आदम से था ईसा जनाब फातिमा दुल्हन अली ये मुर्तजा दुल्हा अरे हुई शादी न ऐसी हजरत आदम से था ईसा जनाब फातिमा दुल्हन अली ये मुर्तजा दुल्हा जो ये बिनते पैगंबर थी तो वो मौलूद काबा थे नबी के घर की थी दुल्हन खुदा के घर का था दुल्हा मौल अली मौला 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 अली मौला मौला अली दरे जन्नत पे जब रखेंगे कदम मुझसे रिजवा जो पूछेगा उस दम साफ कह दूंगा अरे साफ कह दूंगा मैं खुदा की कसम तुम नहीं जानते कि कौन है हम है दरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तजा अली हस्तम अली मौला मौला ला मौला अली ला अली वो इसमें आज़म है कि जिसने पुकारा उसी के काम आया Once more, give a huge round of applause, everyone. Now, as our evening comes to an end, I ask all of you present here, what does Tehzeeb means to you? And I am willing to give anything to that fact that now Tehzeeb to you is not just politeness anymore. And this time, we ask that you all please rise and direct your attention for national anthem.
शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जया गाथा, जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। I now request our chief guest to say a few words of encouragement. Congratulate each one of the artists here for the wonderful performance. Everything was superb, and probably this was a memorable evening for the visiting team. I have a special message for the children. You have got extraordinary God-gifted talent, and continue with this. Don't leave it halfway through. Again, on behalf of the team and my personal behalf, I congratulate all the artists, the directors, and the accompanists, those who have made this show really beautiful and memorable. Also, I thank the galaxy of audience sitting here for enjoying this show and encouraging our children. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए। लखनऊ की तहज़ीब के मुताबिक हम आपका इस्तकबाल उतना नहीं कर पाए जितना मैंने दिल में सोचा था, लेकिन अगर कोई कमी रह गई हो तो हम लोग उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो इतना भी हो सका, जितने अच्छे से अच्छा हम लोग क्या कर सकते थे, दिखा सकते थे, वो ये बच्चों ने दिल और लगन से काम किया। ये सिर्फ आपके स्वागत में हमारे सिर्फ चेहरे नहीं खिले हैं, बल्कि दिल भी खिला हुआ है। और ये खिला हुआ दिल ये बताता है कि लखनऊ ऐसा शहर है कि जब आप आइए तो मुस्कुराइए, मुस्कुराते हुए जाइए, और इस हिंदुस्तान के अंदर आपस में मोहब्बत, एकता, भाईचारा फैलाइए, और जब भी किसी से मिलिए तो मुस्कुरा के मिलिए। आइए हम सब मिल कर के हाथ में हाथ मिलाकर इस देश को, इस भारतवर्ष को, इस हिंदुस्तान को और महान बनाएं। इस उम्मीद के साथ आप तमाम लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए हमें माफ़ कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने इतना वक्त दिया। थैंक यू सो मच।
प्लेयरिंग का आप लोग खड़े होकर ताली बजाने का कॉल करें। हम ये गुजारिश करेंगे कि वो क्या जो कोऑर्डिनेटर ऊपर करते ये अपनी सीट पर वो घड़ी आ गई कि जिसका हमें इंतजार था। आज हमारी नैक पेयर टीम हमारे सामने मौजूद है कि जिसने हमारी क्वालिटी एश्योरेंस की सारी चीज़ों को देखा और क्वालिटी एश्योर करने का फैसला लिया होगा। हम इस डायस से, शिया कॉलेज से, मैनेजमेंट की तरफ से, प्रोफेसर अजीज हैदर साहब की तरफ से, अब्बास मुर्तज़ा शमसी साहब की तरफ से, मौलाना यासूब अब्बास साहब की तरफ से और अपने सभी टीचर्स हजरात की तरफ से और नॉन टीचिंग हजरात की तरफ से हम इस्तकबाल करते हैं। इस मौके पर जो इस वक्त एग्जिट मीटिंग है, बड़ा कहते हुए अफसोस हो रहा है। 2 दिन हम लोग के बहुत अच्छे गुजरे नैक पेयर टीम के साथ। हमारे चेयरमैन ऑनरेबल प्रोफेसर कमल के मिश्रा जी के साथ, जो चेयरमैन हैं नैक पेयर टीम के, हम उनका आप सब हजरात की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की तरफ से उनका इस्तकबाल करते हैं। हम इस्तकबाल करते हैं नैक पेयर टीम के कोऑर्डिनेटर ऑनरेबल प्रोफेसर संजीवी शांता कुमार जी का। और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 2 दिन कॉलेज के अंदर बहुत मेहनत करके, बहुत थकान उठा के, बहुत परेशानियां उठा के, एक एक डिपार्टमेंट का दौरा करके यहाँ पे अपना वक्त दिया। उसके बाद हम इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं अपने ऑनरेबल मेंबर प्रोफेसर पंधारी नाथ मूचंडे जी का, जिन्होंने हमको कॉलेज में जहमत बर्दाश्त की और पूरा अपना कीमती वक्त दिया और पूरी तरीके से कॉलेज के एक एक डिपार्टमेंट का तज्जिया किया। इसके साथ ही हम गुजारिश करेंगे प्रोफेसर कमल के मिश्रा जी से कि वो अपनी रिपोर्ट हमारे प्रिंसिपल प्रोफेसर शबीर रजा बाखरी साहब को देने की जहमत करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी नैक पेयर टीम का, हमारे चेयरमैन ऑनरेबल प्रोफेसर कमल के मिश्रा जी का और मेंबर कोऑर्डिनेटर का बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूं। और यहाँ पे शिया कॉलेज में तशरीफ लाने का, और बहुत कम वक्त मिला, कुल 2 दिन का वक्त मिला इनके साथ रहने का, लेकिन 2 दिन आप यकीन नहीं करेंगे कि कैसे कट गए, कि जैसे मालूम ही नहीं हुआ कि 2 दिन जो है वो 2 घंटों की तरह से हम लोग के कटे हैं। इतना अच्छा अखलाक, इतना अच्छा मिजाज कि जो है कल तक जब तक हम लोगों ने इनको देखा नहीं था, मिले नहीं थे, तब तक के हम लोग बहुत डरे हुए थे,
और बहुत घबराए हुए थे, लेकिन मिलने के बाद मालूम हुआ कि बड़ों की शफकत क्या होती है। उन शफकतों से हमारी नैक पे टीम ने हम लोग को, हमारे कॉलेज को नवाजा है। अब मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर चेयरमैन प्रोफेसर कमल के मिश्रा जी से कि वो अपना नजरिया हमारे टीचर्स के सामने रखें। हम प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करेंगे कि ये शिया कॉलेज का न्यूज़ बुलेटिन आप मेंबर्स को, चेयरमैन साहब को दें। Honorable Principal of the college, respected IQAC Coordinator, respected members of the peer team, my colleagues, respected Chairman or President of the Board of Trustees, honorable members of the Board of Trustees, esteemed teachers of this college, staff of this college, students, ladies, gentlemen, and friends from media. It was indeed a wonderful visit. It was an opportunity for all three of us having visited your institution. And as I always say, that every day we learn something new, and here also, during these 2 days of interaction, we learned a lot of things from this college. Yesterday was a very hectic day for all three of us because we had to see all facilities that are available, all possible facilities that are available in this college to make a true assessment, a very candid kind of assessment, and submit a report to the NAAC for accreditation. So it was very hectic physically for me. My colleagues are much younger than me. Somehow they could withstand the kind of visit. Yesterday was a hot day, all of you know, worse than today. But then, in spite of that, our mission was to see as much as possible of the college, also to interact with all possible stakeholders, members of the managing committee, students, teachers, staff, alumni, and parents also. So that was a wonderful occasion to know the college from a very close quarters or from a very short distance. That was a wonderful opportunity. Friends, I don't want to make a long speech because it is already late and I'm really obliged that I was telling my colleague that see the hall is full. That means you have been waiting for us, maybe for half an hour. I beg apology, but then I want to let you know, you might be thinking that some of the things we skipped, but then we did not skip any single thing of the college. We have tried our best to see everything possible. In the morning we saw, after the presentation of the principal and the IQAC coordinator, when we came out of the board room, first of all, we wanted to see the rainwater harvesting facility. And this is a very positive kind of thing, that it's not at one place. In other institutions, just to show the NAAC team, they have just one pit and they say this is our rain harvesting system. But then here you have got 4 or 5 different rain harvesting systems. We were impressed. Very quickly I will gloss over. We also interacted as a team, all three of us. We interacted with the finance department.
with the administration. Then we went to the library. We went to the School of Law. Also, we saw the Legal Aid Clinic, Department of Commerce, Department of Computer Science, then Audio Visual Studio, and the Department of Journalism and Mass Communication. We were really impressed. Your students have been doing wonderful work. If you see this newsletter, it was yesterday's visit, and today it has constituted a part of this newsletter. I would consider that this is not a mean achievement. This is a wonderful dedication of your students and teachers. I am really overwhelmed that you have presented us with this wonderful newsletter. I will keep this in my personal file for the rest of my life. Thank you so much. Then we visited the IQAC office, E-Waste Collection Center, Proctor's office, auditorium, and then the Heritage Museum. That is a wonderful piece of small space. Lucknow being a heritage city, I would request all of you to contribute to the Heritage Museum. Now it is in a very small space. I think my suggestion would be to shift it to a larger room, or an extra space has to be made. That is probably the kind of remembering our heritage, the kind of heritage that Lucknow has, and to show it to the outside world. So I think the Board of Trustees, Board of Management will take it seriously and expand the Heritage Museum of the college. Like in all universities we find museums, so this is a wonderful heritage museum. It has to be expanded, and all visitors to this college must see this heritage museum. After this, we went to the Department of Chemistry. Then we saw the botanical garden and also the water body, departments of sociology, zoology, botany. Then we went to the career counseling and job placement center, NCC and NSS activities, Information Bureau and Wellness Center, Department of Physics, Mathematics. Then we came to the canteen. It has got a small canteen, but then we wanted to have a cup of tea to see how it serves. And we really appreciated the kind of tea that was served to us. I don't know about Lucknow, but then I know in other cities in 5 rupees, you don't get a cup of tea. But here you get a cup of tea. Although the cup is small, doesn't matter. But then for students, it's okay. 5 rupees ki chai. So that was a good thing of the canteen, but that needs a little bit of more space so that students can sit there comfortably. We have discussed this matter with the Honorable Principal and the IQAC coordinator. I hope they will, make a little provision for the students so that students are not inconvenienced. Then we saw the vermicompost, solar facility, the sensor light facility, all along the corridor, very impressive. We also visited the cultural club, then the daycare center, and then adjacent to that is the girls' common room. And we were very happy that there are separate common rooms for the girls. Then we had also visited the Department of Political Science. You can count how many departments we visited, almost all. Department of Political Science, Department of English, Economics. Then we entered into the grievance cell. We also inquired how the students' problems are sorted out. Then the Gender Center and ICC. Then we went to the Anthropology Museum and Lab. Also I suggested that Anthropology Museum needs particularly a little bit of attention. There is a lot of thing has to be done. Of course, I understand that there are not many teachers available. There is a single teacher, and therefore that must be a difficult task, but it needs some kind of improvement. And I draw the attention of the Governing Board to make some provision, give some attention to Anthropology Museum also. Then we met the students. It was overwhelming. I asked your teachers, with all respect, that please stay outside because we want to listen to the students. What is their candid view? All of them were praising
so much about the college and its facilities. And whatever the grievances, we have recorded them and we have conveyed it to the managing committee as well as to the authorities of the college. Then we also had a meeting with the alumni and the parents. Some of them were excellent. They were saying that yes, this is probably one of the parents. I was really impressed when one of the parents said that I send my child, my girl, particularly to this college because I find that this is the safest place. That kind of parents have that kind of confidence on this college. And these days you don't find many such institutions where the girls particularly feel so much safe. While winding up, we also saw the volleyball court, the cricket stadium, the indoor stadium, and finally, at the end of the day, we enjoyed the cultural program, which was amazing, probably. It was a presentation of cultural heritage of Lucknow. The play that was performed by your students was excellent and unforgettable, you know. Friends, that was the end of the day, and we see all possible facilities, all available facilities, discussed with almost all stakeholders and tried to prepare a very authentic report. But let me also point out that when you submit the self-study report, when the college submits the self-study report, the NAAC makes an assessment of 70% of the quantitative data that are provided by the report. The committee, the committee which has come here only makes an assessment for the 30%. Therefore, our jurisdiction, I hope you could understand, otherwise your coordinator will make you understand later on. So, our scope was very limited, but within our limited scope, the kind of impression that we got, we have tried our best to give our input to the best possible way, in a very authenticated way, as a neutral observer. Thank you. Thank you. We tried to do our best, and before all of you, I have submitted the sealed cover of the report to the Honorable Principal. And he is supposed to open it. He is supposed to open it once the NAAC declares your grade. So we have tried our best, and it was a memorable experience for all three of us. We are all grateful to you for the Lucknowi hospitality. With a heavy heart, we had to say no to some of our hospitalities because those were really not necessary, not required. But still then, your broad heart had impressed all of us. Thank you so much for your hospitality. Friends, today also was a very tiring day. From 10:30 we started working on the report. Sometimes there was a network problem, sometimes there was electricity problem, but somehow we tried our best to complete the work in record time. We did it because of the grace of Almighty. We could do it, and now the report is in the hands of the principal. With these words, I take leave from you. Thank you again for the hospitality, and I would now request the members of my team to say a few words. Thank you so much, if they like, if they like. थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं अपने चेयरमैन मिश्रा जी का। और अब इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा और पेयर टीम मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपसे बोलूंगा
मैं गुजारिश करता हूं प्रोफेसर शबीर रजा बाखरी साहब प्रिंसिपल शिया पीजी कॉलेज से कि वो तशरीफ लाएं और वोट ऑफ थैंक्स अदा करें। इसके बाद नेशनल एंथम होगा और मैं पेयर टीम के मेंबर से बताना चाहूँगा कि अभी आपकी कुछ दिन पहले फोटोग्राफ्स आई थी और हमारे कॉलेज के बच्चों ने आपके पोर्ट्रेट बना के और 2 दिन के अंदर तैयार कर दिए। ये 1 दिन में तैयार किए। वो बच्चे आपको वो पोर्ट्रेट जो है गिफ्ट करना चाहते हैं। तो उसके बाद स्केच बनाए आपके पोर्ट्रेट। सर खोल के दो बेटा। प्रोफेसर संजीवनी शांता कुमार जी को प्रोफेसर कमल के मिश्रा जी को बच्चे ने पोर्ट्रेट गिफ्ट किया है। और आप सब देखें कि हमारे कॉलेज के बच्चे कैसे हैं। ये मास कम्युनिकेशन के बच्चे हैं, बीबीए के बच्चे हैं, सॉरी सर, बीबीए के बच्चे हैं, क्योंकि आज ही तैयार किया इन्होंने 1 दिन में। और प्रोफेसर संजीव कुमार जी को, प्रोफेसर संजीव कुमार जी, प्रोफेसर पंधारी नाथ जी, और सर ये बीबीआईबी के बच्चे हैं और इन्होंने 1 दिन में ये पोर्ट्रेट तैयार किए। अब मैं गुजारिश करूंगा प्रिंसिपल साहब से, सर से, कि वो तशरीफ लाएं और वोट ऑफ थैंक्स अदा करें। Thank you, Dr. M.M. Abu Tayyib Saab, our IQC coordinator, for giving me this one of its kind opportunity to present the vote of thanks to our very distinguished guest, Sir, Honorable Chairperson, Professor Kamal K. Misra Sir, Professor Sanjeevi Shanta Kumar Sir, Professor Buchade Sir. Sir, as our 100-year-old institution stands at the threshold of a historic transition, we really feel absolutely blessed to have such a distinguished bunch of academicians in our campus. Sir, before you came, we were very apprehensive of the visit. The perception that we had in our mind was of some academicians who would be very rigid, who would evaluate us with a lot of negative mindset, and we knew our weaknesses. So we were not as much proud of our strengths as we were apprehensive of our weaknesses. But once the show set on, our apprehensions were gone. Sir, I am absolutely amazed to find that this truly turned out to be such a wonderful learning opportunity for all of us. We have learned a lot. All the deliberations that took place, all the exchanges that took place, all the visits that you undertook to various departments and various facilities of our college were full of lessons for us to learn. And sir, we have made our best efforts to make the maximum utilization of this wonderful opportunity. Sir, we know that the city is known for its hospitality, and we wanted to put a glimpse of this, but there might have been some imperfections in that. We might have not been as much hospitable. We could not portray as much hospitality that one might expect from us, but I hope that you would be forgiving us. Sir has been very generous. I am going to share this.
I'm not going to share the report with anyone. I'm not going to unseal the envelope, but I must say that all the three experts have been so generous, so courteous, and so supportive that we could not think of a better outcome. Sir, as our destiny stands sealed in an envelope, and we keep our fingers crossed, we look forward to this. Whatever our grades are, whatever our grades turn out to be, we will be happy that we had such dignitaries in our campus. I really feel overwhelmed. I don't have words. Sir, there are places where lexicon is not sufficient. You don't have appropriate words to express you. You don't have proper vents to let your feelings go. But we have to compromise in such situations. So with whatever meager vocabulary I have, I thank you all. I thank you for your gracious presence. Sir, in preparing for this visit, our staff and our IQC coordinator, our management, they have been so supportive and they have put their best efforts. I don't have enough words to encourage them, to say thanks to them. And if you are able to pull it off with grace, and if you are able to get away with good grade, that will be a huge encouragement in itself. So we are deeply indebted to our management and our mentors, Maulana Yasir Abbas Sahab, who is a personality and orator of international fame, and heir to the grand legacy of Maulana Mirza Muhammad Atta Sahab Qibla, who is a leading light of our college, and all his brothers, and our IQC coordinator, most importantly our Honorable President Sir, who is an academician, and our Honorable Manager Sir, who has been involved at each and every step of this exercise. I really feel overwhelmed to thank everyone. Sir, I am falling short of words. I am getting overwhelmed with emotions, and that's why I would like to end at this note. We hope that we will be able to get a good grade, sir, with your blessings, of course. For this collective effort, I would like everyone to give a huge round of applause and a standing ovation. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। अब नेशनल एंथम के लिए अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। अब